Hello everyone and welcome back to Vidya Mandir classes, and we were doing the KVPY series. तो हम heredity discuss कर रहे हैं. तो in the heredity we discuss what is inheritance and what are the different cross. Okay, the father of genetics we discussed, it was John Gregor Mendel, and today we are continuing with the heredity, that is dihybrid cross. Okay, monohybrid cross हमने discuss कर लिया था. Monohybrid is a cross wherein only one character is taken. Okay, and dihybrid cross in which you have two characters which can be taken. So यहाँ पे two contrasting traits are taken in a dihybrid cross. So dihybrid cross is a cross between two pairs of contrasting traits. Okay, and Mendel had done the dihybrid cross using one of the famous जो cross हम पढ़ते हैं, that is with seed shape and seed color. Okay, seed shape and seed color. So seed shape एक character है and seed color is the other character. Okay, seed shape में you had the dominant and the recessive. Seed color में dominant and recessive. The dominant seed shape was round. It was round, and recessive shape was wrinkled. वैसे ही seed color में dominant color was yellow and recessive was green. ठीक है. So ये दो pairs लिए थे. You can say this were the two characters, seed shape and seed color, which were considered by Mendel in doing this dihybrid cross. So यहाँ पे जो dihybrid cross हम करते हैं, it will be one parent will be dominant, the other parent will be recessive. Okay, so round and yellow is one parent and the other parent is green, wrinkled and green. So two. So जो parents, okay, male and the female. So over here the male parent is round yellow and female parent is wrinkled green. Okay, तो अगर हम इनका जीनोटाइप देखें, so this will be the phenotype, that is the observable character. इनका जीनोटाइप is R, capital R, capital R, capital Y, capital Y. In female में wrinkled green में small r, small r, small y, small y. ठीक है. These were the two parents considered. अब ये parents they will produce gametes. So यहाँ पे gametes बनेंगे इनके. So gamete will be capital R, capital Y. This will be the gamete क्योंकि here सब ये homozygous condition में है, and in here also small r, small y. So this will be the gamete produced
by these individuals. Okay, so these individuals, they will undergo fertilization. Okay, इनके बीच में fertilization होगा, and the resulted individual will be capital R, small r, capital Y, small y. Phenotypically, this will be round yellow. Okay, phenotypically it will be round and yellow. So ऐसा ये seed दिखेगा. So this thing which you got is the F1 generation, that is first filial generation. From here, if you do the selfing, that is self pollination. Okay, यहाँ से अब अगर self pollination करते हो, it is called as selfing. Okay, selfing will be done between capital R, small r, capital Y, small y. Okay, so selfing between the F1 generations, and the gametes which will be produced by them each. Okay, इनके gametes अगर हम देखें, they will produce 4 gametes. Okay, 4 gametes. This one, this one, this one, this one. Sorry, this one with the capital R, capital Y. This is one gamete. Capital R, small y. This is another gamete. Third gamete will be small r, capital Y, and the fourth gamete is small r, small y. So ये 4 gametes बनेंगे from this particular individual. Okay, so there is formation of 4 gametes, and you all know the formula for gamete production. It's 2 raised to n. N is the number of heterozygotes to 2 raised to 2, which is 4. So you will get 4 gametes in total. यहाँ पे 4 gametes in total आपको मिल जाएंगे. So आपको मिल गए हैं. These are the 4 gametes which you get. This 4 gametes इन 4 gametes को हम फ्यूज करके आपको मिल जाएगा the zygotes. We will do blood grouping. After doing this, we will do the next thing is the blood grouping. Okay, तो हमारे जो female gametes है, this will be for the female gametes and these are for the male. ठीक है, यहाँ पे हम male gametes लिखेंगे. This side will write the male gametes and this side will write the female gametes. तो वैसे तो gametes same ही है, तो यहाँ पे changes नहीं है. तो first is capital R, capital Y. Second is capital R, small y. Third is small r, capital Y. Fourth is small r, small y. Okay, same thing will come on this side. Okay, like this.
देखो इनको आपको क्रॉस करना है, मतलब इनका फ्यूजन जब होगा तो आपको जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे दे विल हैव दिस जीनोटाइप, ओके, उनमें ये जीनोटाइप रहेगा। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल y, always write the dominant first then the recessive. Capital R, small r, capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y। ठीक है, अब देखो आप भी साइमल्टेनियसली लिख देना इसको, इट विल मेक अ गुड प्रैक्टिस ऑफ योर्स। कैपिटल R, small r, capital Y, small y, then you have capital R, small r, small y, small y। फिर आता है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, capital R, small r, capital Y, small y, then small r, capital Y, capital Y, small r, capital Y, small y, last one capital R, small r, capital Y, small y। लास्ट इज स्मॉल r, small y, small y। ठीक है, ये हमारे इंडिविजुअल्स हमें मिलते हैं। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, जो भी ये इंडिविजुअल्स हैं, दिस विल बी राउंड एंड येलो, ओके, राउंड एंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो। ये क्या होगा, राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। ठीक है, ये राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, this is also round and yellow, this is round and green, ये round है and yellow, this is round and green, this is round, yellow, round, green, ये है wrinkle, yellow, this is wrinkled and yellow, ये क्या है, wrinkled है and yellow है, और the last one है which is wrinkled and green। So if you note this down, ओके, यहाँ पे आपको 9 इंडिविजुअल्स ऐसे मिलेंगे जो कि राउंड एंड येलो होंगे, ओके, 3 ऑफ देम विल बी राउंड एंड ग्रीन, 3 विल बी राउंड एंड wrinkled and yellow, and 1 will be wrinkled and green। सो आप देख सकते हो, this will be round and yellow, this is round and yellow, this is round and yellow, और कहाँ है राउंड एंड येलो, और नहीं है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so 9 of them will be round and yellow, 1 2 and 3 will be round and green, then this is wrinkle and yellow, wrinkle and yellow, 3 will be wrinkle and yellow, and 1 will be wrinkle and green। ठीक है, so यहाँ पे जो आपको रेशो मिलता है, the phenotypic ratio if you see of a dihybrid cross, so phenotypic ratio कितने राउंड एंड येलो होंगे is to round and green is to
wrinkled and yellow is to wrinkled and green. ठीक है, and the ratio comes to be 9:3:3:1. अब जिसको इतना आ गया, मतलब इसके सारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन हियर इज डिपेंडेंट ऑन दिस फिनोटिपिक रेशियो. ओके, जो आपका फिनोटिपिक रेशियो होगा वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. सो ये देखो, okay, ये क्रॉस है. A cross was this question, okay, this was asked in 2017. So a cross was carried out between two individuals heterozygous for two pairs genes was carried out, assuming segregation and independent assortment. The number of different genotypes and phenotypes obtained respectively would be. Okay, so उसको solve करने के लिए you need to know two equation, two formulas kind of. So 2 raised to n is equal to number of phenotypes. Okay, and 3 raised to n gives you number of genotypes. ठीक है, so number of phenotypes 2 raised to n and number of genotypes is 3 raised to n. So by putting this formula you can have कितने pairs of heterozygous individuals, 2 individual. Okay, 2 individuals were heterozygous for 2 pairs of genes. 2 pairs of genes मतलब ये dihybrid cross हो गया, और 2 individual heterozygous मतलब यहाँ पे जो heterozygous genes है वो 2 है. So number of heterozygous will be 2. So answer will be 4. Okay, और जो number of genotypes will be 3 raised to 2 which is 9. ओके, 3 स्क्वायर इज 9. सो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन विच मैचेस ओवर हियर इज, सो यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली वुड बी. मतलब पहले आपको जीनोटाइप बोलना है और फिर आपको फिनोटाइप बताना है. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? द आंसर विल बी सी. ठीक है, द आंसर विल बी सी. सो 9 विल बी द जीनोटाइप्स एंड to 4 will be the phenotypes. तो ऐसे type of questions आ सकते हैं in this. Also they can ask you how many round and green were obtained. So there were 3 round and green. How many wrinkled green can be obtained? That was 3. Okay, इसके अलावा अगर हम और एक क्वेश्चन देती हूं मैं. There can be a question, how many recombinant type were obtained in F2 generation of Mendelian dihybrid cross. Okay, and the options are 3, 9, 36 and 4th is 1. Okay, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको जो रेशो मिला है द फिनोटिपिक रेशो, बेसिकली जो भी क्वेश्चंस पूछते जाते हैं वो फिनोटिपिक रेशो के ऊपर ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा. सो इफ यू सी इन दिस,
ओके, ये जो क्रॉस जो हमने बनाया है और ये आपको जो मिला है, so this is called as the F2 ratio. Okay, these are the F2 generations. ये जो आपको मिलता है ये सारा F2 generations होते हैं. F1 will be this one. ये होता है F1, this is F1 and this everything will be F2. और ये F2 phenotypic ratio है और उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू इज द रिकॉम्बिनेंट. अब रिकॉम्बिनेंट कौन से होंगे? आपको जो रेशियो है वो है 9:3:3:1. ठीक है, इसमें से ये है 9 और 1, 9 इंडिविजुअल एंड 1 इंडिविजुअल, दे आर सेड टू बी पेरेंटल, क्योंकि ये एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह ही दिखने लगते हैं. ओके, दे आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स, सो दीज आर पेरेंटल. और जो हमें नए बने हैं, मतलब जो मिक्स होके जो नए चीज बने हैं, दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट्स. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट्स. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इधर? अब व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ योर्स? सुपर गेमिंग 3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन है कि थर्ड ऑप्शन? ओके, ऑप्शन 3. सो आंसर विल बी दिस. ओके, so 3 plus 3 will be the recombinant, that is 6. 6 will be the recombinant individual. Okay, so essay type of question. Can be asked over here? Now, whatever this thing was, okay, जो भी dihybrid cross था, it revealed his fourth postulate. So मेंडल का जो हमने 3 postulates हमने देख लिए थे, so this was the fourth postulate. This gave rise to the fourth postulate, you can say. So Mendel's dihybrid cross revealed his fourth postulate, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Okay, law of independent assortment. Now what does law states? This law states that, so it states that the alleles of 2 different characters, जो या traits, okay, they will segregate, okay, separately वो segregate होंगे, and during the fusion, or you can say during the fertilization they will come together. Okay, और जो भी अगर हम separately ये dihybrid cross अगर हम separately करके भी देखें as a monohybrid, you will get the same ratio. So dihybrid cross is actually 2 monohybrid cross put together. Okay, 2 monohybrid cross put together will give you a dihybrid cross. So this states that the alleles of 2 different characters or traits segregate or assort independently okay, the segregation of alleles of a trait in a gamete is independent of the segregation
of alleles of the other trait. That means कि जो अलील्स जो गैमेट्स बनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का अलील रहेगा. ओके, and it doesn't depends on the other allele. So it will be separate, segregation इनका independent होता है, and when the gametes fuse then only both the characters will be together. Okay, but they will not get mixed. So this is about dihybrid cross. अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग का. Okay, example of this one, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यही तो अभी मैंने दिखाया ना. सो जो राउंड एंड येलो है, राउंड एक कैरेक्टर है, येलो एक कैरेक्टर है. ठीक है, तो राउंड व्हेन टेकन separately will segregate as round only, and yellow when taken as yellow it will segregate as yellow only. तो दोनों जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट है, they are not dependent on each other. That means कि राउंड अगर येलो के प्रेजेंट में ही है तो राउंड आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो राउंड अपने आप एक्सप्रेस होता है और येलो अपने आप एक्सप्रेस होगा. Okay, that means the independent assortment. Okay, blood grouping. Now, if you see the blood grouping in humans, we follow the ABO blood grouping. There is ABO blood grouping. Okay, and this was given by Landsteiner, ठीक है. तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था. So this was discovered, Landsteiner ने डिस्कवर किया था. So ABO blood grouping. Now this particular blood group, okay, ABO blood grouping, it is governed by a gene. ABO blood grouping का जो gene है, that is I. Okay, I is the gene, and इसके जो alleles है, there are 3 alleles of I. The alleles of I will be IA, IB, and small I. ठीक है, so IA, IB, and small I are the different alleles. RH is the it's a factor. Okay, RH is the factor which comes from the rhesus monkey. Okay, RH मतलब rhesus monkey से derive किया हुआ है, and it gives you the basically the antigen antibody interaction. Okay, अगर पॉजिटिव नेगेटिव वो एक कोएगुलेशन की वजह से आपको मिलता है. Yeah, linkage will also be done. Okay, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिंकेज करेंगे. ठीक है, सो ABO जो ब्लड ग्रुपिंग जो जीन है, इट इज द I जीन, एंड इसके अलग अलग अलील्स हैं. सो बेसिकली देयर आर 3 alleles of I gene, which is IA, IB, and small I. Now, all of the 3 alleles will not be present in one individual. You will find that in the population. Okay, so all 3 alleles of I gene can be seen in the
population and not in a single individual. A person has only two allele of a gene. Okay, दो alleles ही हो सकते हैं of that particular gene in an individual, क्योंकि it is a diploid, so एक allele एक क्रोमोसोम के ऊपर होगा, दूसरा दूसरे साइड पे ऊपर होगा. Donor, recipient, antigen, antibody. एक सेकेंड. Antigen, antibody, and the allele. O, A, B and AB. ठीक है, तो ये चार ग्रुप है, O, A, B and AB. These are the 4 groups. अब इसमें देखो, अगर these are the donors, तो इनके recipient कौन होंगे? Donors are the one which will give the blood and recipient are the one which will receive the blood. मतलब जब transfusion होता है. तो if the person is O, okay, it can give blood to O, A, B and AB. ठीक है, तो ये चारों ग्रुप को ब्लड दे सकता है. तो रेसिपिएंट दे कैन टेक O blood. If A is the donor, तो रेसिपिएंट यहाँ पे कौन होगा? A and AB. Okay, A और AB. If the B is the recipient, then B and AB. If AB is the donor, तो रेसिपिएंट कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ AB. ठीक है, सो दिस इज द डोनर एंड द रेसिपिएंट. अब इसमें एंटीजन क्या होगा? एंटीजन एक्चुअली एक शुगर होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन दी ब्लड. ओके, सो आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उस पे शुगर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंटीजन which will react with the antibody. Okay, और एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता है, एंड that's how you get to know your blood grouping and all. So antigen of O, okay, there is no antigen for O.
ए के लिए the antigen is A, B के लिए B, and AB के लिए A and B is the antigen. Antibody for O will be so इसके according में you will have one question. You have one question over here. तो इसका आंसर बताओ. What will be the answer? देखो अभी मैंने डोनर और रेसिपिएंट के बारे में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना है. So such answers should be discussed. देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए जो है उसमें डोनर ओ ए बी एंड ए बी है. तो ओ अगर है तो इट कैन गिव ब्लड टू ओ ए बी ए बी. तो ये नहीं हो सकता. ठीक है. सेकेंड में देखो ओ is not giving blood to anyone, so this can't be the answer. थर्ड में देखो O is giving blood to O, but A B भी ले सकता है, तो ये भी नहीं है. तो आंसर over here will be D. ठीक है. So D will be the answer for this question. अभी जो हमने टेबल फॉर्म में किया था सेम थिंग. अब देखो ओ के लिए एंटीजन तो कोई नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसकी ए और बी दोनों रहती है. तो इट इज ए एंड बी आर दी एंटीबॉडीज. ओके फॉर ए, फॉर ओ सॉरी. ए के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है? बी के लिए ए होता है, और ए बी के लिए दे वोंट बी एनी एंटीबॉडीज बिकॉज उसके ऊपर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. ए और बी दोनों एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन ए बी, सो देयरफॉर देयर वोंट बी एनी एंटीबॉडी. तो इस ब्लड ग्रुप के क्या अलील्स बन सकते हैं? अलील्स फॉर ओ के लिए अलील है स्मॉल आई. ओके. A के लिए the alleles can be capital I A या ये हो सकता है. These are the two alleles. B के लिए this can be there, and last AB, for AB it is this. ठीक है. So this are the alleles, different alleles. So if you see यहाँ पे आपको फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स कितने मिलेंगे? फिनोटाइप्स कितने होंगे और जीनोटाइप्स कितने होंगे? फिनोटाइप्स विल बी दिस व्हाट यू सी, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप आप देख सकते हो. O A B and AB, these are the four phenotypes that you can see. And genotypes हमें कैसे पता चलेगा? On the basis of alleles. तो यहाँ पे कितने alleles हैं? This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So total यहाँ पे 6 alleles है. This is 1 allele, second, third, fourth, fifth and sixth. तो टोटल यहाँ पे 6 जीनोटाइप्स आपको मिलते हैं. और phenotype will be 1, 2, 3 and 4. So you can write
For ABO blood group, number of phenotype is 4 and number of genotype is 6. Okay, so number of genotype is yes, Ram Pravesh, 4 phenotypes and 6 genotypes. Yes. तो ये this was a question asked in 2019. Okay, ये 2019 का question है. Another question is also there. Yeah, ये question. Okay, this is the question. If the genotype determining the blood group of a couple is capital A and capital B and capital A, capital B, तो दोनों पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है ब्लड ग्रुप. Okay, then the probability of their first child having type O blood. टाइप O blood. टाइप O कैसे? O मतलब ये होना चाहिए, राइट? O ब्लड ग्रुप अगर रहता है तो दिस शुड बी देयर. इसको सॉल्व करने के लिए इसके जो गैमेट्स बनेंगे, द गैमेट्स विल बी IA IB, दोनों पेरेंट्स के IA IB. सो जो इंडिविजुअल्स बनेंगे IA IA IB IA IB एंड IB. तो देखो IA IB एंड IB. इनका रेशो क्या है? 1:2:1. रेशो इज 1:2:1, और यू कैन से 25%, 50% is to 25%. अब यहाँ पे कहीं पे भी जीरो नहीं, सॉरी, यहाँ कहीं पे भी O ब्लड ग्रुप नहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दिस ब्लड ग्रुप इज A, दिस इज AB and this one is B. Okay, this one is B. So there is no formation of O blood group. Therefore, the answer for this question will be 0. Okay, so A will be the answer over here. So ऐसे simple questions आते हैं from this blood grouping. Also to mention something, जो IA and IB जो blood group है, this is called as co-dominance. Okay, this is called as co-dominance. मतलब दोनों ही dominate करते हैं. So and they are together. So this therefore it is called as a co-dominance. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके इसके कोडोमिनेंस के लिए अगर वी राइट और क्रॉस, ओके कोडोमिनेंस के लिए क्रॉस अगर लिखते हैं तो इट विल बी IA, this is the male,
and IB, this is the female. Okay, they will undergo fertilization and form an individual which is having this. Okay, so यहाँ पे IAIB दोनों ही dominate कर रहे हैं, so that's why this is an example of codominance. तो AB जो blood group है, which is it shows codominance. If the question is asked, if a couple has what will be the blood group of their children? Okay, if a couple has IA, small I and IA, what will be the blood group of their children? And options can be तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा? The option will be 2. Yes. Okay, ये क्योंकि if you see one parent is having small I, capital I, small I, the other one is having IA dominant. यहाँ से जो इंडिविजुअल बनेंगे IA मतलब गैमेट्स जो बनेंगे वो ये रहेंगे और दूसरी जगह पे सिर्फ A. ठीक है, तो ये these are the alleles for only A, for A blood group. दोनों यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल जो है उनका ब्लड ग्रुप A ही रहेगा. So the option 2 will be the answer for this question. Moving on, we are discussing the next topic, that is sex determination. Yes, sex determination. Now, basically, sex determination is done with the help of sex chromosome. Okay. So, in human, जो sex determination है, is done genetically depending upon chromosomes. Okay, so the sex determination in humans is generally done genetically and it depends on the chromosome. So जो sex chromosomes होते हैं वही decide करते हैं what will be the sex of the child. Okay, whether it will be a boy or it will be a girl.
So there are two types of chromosome if you see in the humans. So two types of chromosomes are present in human. एक तो ऑटोसोम्स और दूसरे हैं एलोसोम्स. ओके, वन इज ऑटोसोम, दूसरे है एलोसोम्स. एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं. Okay, now the autosomes are the chromosomes which are present in all, मतलब जो vegetative form, also somatic chromosome होते हैं. Okay, जो हर vegetative form में help करते हैं, so growth वगैरह में. So those are the somatic chromosome, and sex chromosome are the ones which will only help in the determination of sex of the child. So autosomes are the chromosomes other than the sex chromosomes. Okay, so in human, if you see, we have 46 chromosomes. That is the diploid set. Okay, diploid set जो 2n set होता है वो 46 chromosome का होता है, which is 23 pairs. Now from this 23 pairs, 22 pair, these are autosomes, and only one pair, that is the 23rd. Okay, 23rd, that is the sex chromosome. Okay, that is the sex chromosome. So जो सेक्स क्रोमोसोम जो मेल में रहेगा वो अलग रहता है फीमेल से. So in the male it is XY and females में it is XX. Okay, this will produce gamete. So male जो है वो दो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मतलब दो फॉर्म के गैमेट प्रोड्यूस करता है. एक तो X कंटेनिंग गैमेट एंड दूसरा है Y कंटेनिंग गैमेट. ओके, सो जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे उसमें एक में X हो सकता है, half of the sperms will carry X, half of them will carry Y. Whereas the females, they produce only one type of gamete, that is having X chromosome. ठीक है, so the responsibility of sex determination in the humans is solely on the male. Okay, और इसको अगर हम क्रॉस फॉर्म में देखते हैं तो यू कैन सी फीमेल and the male. Female has 44 autosomes plus XX, and males have 44 autosomes plus XY. ठीक है, तो ये जो है 44, this can be written as 22A plus X, this will be 1, and 22A plus X, this will be another. तो सारे जो गैमेट्स है उसमें सिर्फ यही प्रोड्यूस होगा. ओके, सेम टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस बाय फीमेल्स, whereas जो मेल्स है they will produce plus X and so इसको हम दूसरे कलर में लिखते हैं. ये दो गैमेट्स बने हैं मेल से. Now when they undergo fusion, we will have 44AA plus
X and X. This 44AA plus XY, and this will fuse with this, forming 44AA plus XY. देखो ये जो इंडिविजुअल्स बने हैं इसमें से this is a girl, you can say female, this is also a female, this is male, and this one is male. Okay, so two individuals can be formed as females and two individuals will be males after the cross of a female and a male gametes. Okay, this is about the sex determination. Okay, two sets of chromosome, two types of chromosome will be the. अब देखो in a cell, okay, cell के अंदर 46 chromosomes होते हैं, 46 number of chromosome, or you can say 23 pairs of chromosome will be present in each of the cells of the human beings. Now only जो सेल्स गैमेट प्रोडक्शन के लिए नहीं है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम्स काम करेंगे, मतलब ऑटोसोम्स विल डू देयर फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड जीन्स एंड ऑल. बट जहां सेक्स गैमेट्स प्रोडक्शन की बात आती है, गैमेट प्रोडक्शन विल ओनली बी डन by the sex chromosome, मतलब it will have the sex chromosomes in it which will determine the sex of the individual. ओके, सो दो टाइप्स के ये गैमेट्स होते हैं, एक है ऑटोसोम्स और दूसरे है एलोसोम्स. ऑटोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज द सोमैटिक क्रोमोसोम्स व्हिच आर 22 pairs in number, whereas allosomes are sex chromosome which is 23rd pair, or you can say the one pair of chromosome will be called as the sex chromosome. So boys and girls में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, it is solely dependent on the male individual and not on the female individual, because females जो है वो एक ही टाइप के gametes produce करते हैं, that is X, but the males they produce two types of gametes, half 50% will be X, 50% will be Y. Okay, what happens to the chromosomes of those people who have Turner's disease? इनमें क्या होता है, जो जिनमें ये टर्नर्स डिजीज या क्लाइनफेल्टर्स डिजीज होते हैं वहां पे देयर कैन बी अबनॉर्मलिटी इन दी क्रोमोसोम. ओके, तो देयर कैन बी एडिशन ऑफ क्रोमोसोम और देयर कैन बी डिडक्शन, मतलब रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम. तो वो तब होता है ड्यूरिंग द एनाफेज, जब मियोसिस, व्हेन मियोसिस टेक प्लेस फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, उस टाइम पे अगर एनाफेज में अच्छे से separation नहीं होता of the chromosome, then there can be extra set of chromosome carried to one gamete and less set of chromosome carried to the other gamete. So ऐसा अगर condition रहता है in the gametes, then this kind of syndromes can be present like Klinefelter's or Turner syndrome. Next, we'll discuss the sex-linked inheritance. Okay, sex-linked inheritance. Now, basically, there are different inheritance that you see. There can be autosomal inheritance. Okay, there can be autosomal inheritance, that is
जो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं, मतलब जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर जीन्स जो है वो इनहेरिट हो सकते हैं. और देयर कैन बी अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मोस्टली दैट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिकॉज इट इज सीन कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इट हैज मेनी genes. Okay, it has the more number of genes as compared to the Y, and it is the most functional, you can say, in females as well as in males. Males में भी जो X chromosome होता है वो ज्यादा important और functional होता है than the Y, क्योंकि Y chromosome only renders the male characters. Okay, it will only give the male characters, लेकिन बाकी के जो चीजें हैं for the male development, it comes from the Y, it comes from the X. Okay, so here we will study about the X-linked inheritance. Okay, linked genes का मतलब है, if this is the chromosome, okay, so जितना ज्यादा करीब होगा, that is the linked. Okay, so linkage can be taken into account with the n number of chromosome, or haploid set of chromosome can be the linkage number of the particular individual. जैसे कि अगर हम पी प्लांट में देखते हैं, पाइसम सिटाइवम में देखते हैं, उसका जो क्रोमोसोम नंबर है, इट इज 14. ओके, क्रोमोसोम नंबर इज 14, बट इसका जो लिंकेज ग्रुप होगा, linkage group is said to be 7. That is the haploid number of chromosome. So this is one chromosome, this is another chromosome. So this is called as the linkage gene. Okay, so sex linked inheritance, we यहाँ पे जो थोड़े examples है which we study for sex linked inheritance or X linked inheritance, those are color blindness, okay, color blindness, hemophilia, okay, color blindness, hemophilia. Now color blindness is the green red color blindness, or red green color blindness. Okay, so individual who suffer from color blindness, they cannot see this green red color properly. Okay, ये सब कुछ ऐसे blur type दिखता है. और hemophilia, the persons who suffer from hemophilia are the ones, if you get a cut or anything in your on your skin or anywhere, so there will be bleeding. Okay, continuous bleeding होती है, यहाँ पे clotting factor absent होता है in hemophilia, and that's why there will be continuous bleeding, which could lead to death of an individual. And mostly color blindness or hemophilia, these two diseases are seen in the males. Okay, males में ज्यादा होता है as compared to females. Females are said to be the carriers of this particular disease. तो इन दी यहाँ पे हम क्रॉस डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस या हेमोफीलिया के. तो फर्स्ट वी विल डू विद द कलर ब्लाइंडनेस. तो फर्स्ट केस कैन बी normal female. Okay, this is a normal female and a color blind man. Okay, color blind man, male.
तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे x over here x and y. Okay, these are the two gametes. If we draw the Punnett pair for this, okay, सारे x से गैमेट बनेंगे. This is for the फीमेल के गैमेट्स यहाँ पे लिखने हैं. ओके, ऐसे. ठीक है. तो इंडिविजुअल्स जो बनेंगे, द 4 इंडिविजुअल्स which will be formed for these two female and male. Okay, so one of them, sorry, 2 daughters, or you can say 50% offspring are carrier. Okay, 50% of the offspring are carrier and 50% offspring are normal. Okay, 50% are normal. So this can be one case. Another case can be wherein mother is a carrier and father is normal. Okay, mother carrier है, father normal है. तो इनके इंडिविजुअल्स, मदर के गैमेट्स ये रहेंगे, फादर के गैमेट्स ये. आफ्टर क्रॉस यू विल गेट दिस. ओके, इसमें देखो, 1 daughter is normal, उसको कुछ नहीं होगा. 1 daughter will be a carrier, so this one is a carrier. This son is normal, whereas this one is a colorblind. Okay, ये color blind होता है क्योंकि it is having the gene for color blindness. and उसके लिए और एक बात, फीमेल्स में दोनों जगह पे ऐसे होना चाहिए. Okay, both the chromosomes should have the presence of color blindness gene. अगर ये homozygous condition में है, okay, homozygous condition में होता है, then this individual is said to be color blind. Okay, if such kind of condition is there wherein one chromosome is not having the gene, the other chromosome is having the gene, so homologous जो chromosomes होते हैं, ठीक है, यहाँ में homologous chromosome पे gene नहीं present है, so this one will be called as a carrier. अब males में क्या होता है, they only have one X, the other one is Y. तो X, दूसरा X तो उनके पास है नहीं, तो इस वजह से वही जीन जो है वो एक्टिव हो जाती है एंड दे विल डू द कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो ये एक केस हो सकता है. तो देयर इज अ क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू दिस. We have a question with regard to same topic. A couple has 2 sons and 2 daughters. Only one son is colorblind and the rest of the siblings are normal. Assuming colorblindness is sex-linked, which one of the following would be the phenotype of the parents? तो इसका आंसर क्या होगा? You have to do the cross and see. Okay, phenotype of parent बताना है, तो इसमें क्या होगा आंसर? What will be the answer? Anyone? What will be the answer? तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे आएगी, वो देखो
क्वेश्चन में क्या है, 2 sons 2 daughters है. ओके, 2 sons 2 daughters, जिसमें से 1 son जो है वो नॉर्मल है, another son is color blind. ओके, a couple has 2 sons 2 daughters, only 1 son is color blind and the rest of the siblings are normal. The answer will be, हमने फर्स्ट 2 केसेस तो देखे हैं, मतलब मदर वुड बी कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, ये केस देखा है. फादर वुड बी कलर ब्लाइंड एंड मदर वुड बी नॉर्मल. Both the parents are normal, both the parents would be colorblind. इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू यू, यू आर सेइंग कि मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है, फादर जो है वो नॉर्मल है. So that cannot be the case. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है. मदर वुड बी कलर ब्लाइंड, फादर वुड बी नॉर्मल. तो क्या मिलता है, दोनों ही सन्स को, दिस इज वन सन, दिस इज द अदर सन, दोनों सन्स को कलर ब्लाइंड होना चाहिए. तो दैट कैन नॉट बी देयर. हमें जो क्वेश्चन दिया है, बोथ पेरेंट्स वुड बी नॉर्मल एंड लास्ट ऑप्शन कैन ऑल्सो नॉट बी देयर, क्योंकि बोथ पेरेंट्स वुड बी कलर ब्लाइंड. तो सभी ऑफस्प्रिंग सन्स और डॉटर्स को कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए. फादर वुड बी कलर ब्लाइंड, मदर वुड बी नॉर्मल. ये देखो, फादर इज कलर ब्लाइंड, मदर इज नॉर्मल. तो क्या हो जाता है यहाँ पे, सन्स को डिजीज नहीं होती है. ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन के नॉट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो आंसर विल बी द थर्ड वन, both the parents would be normal. Normal in the case जो मदर होगी उसमें कैरियर जीन होता है. ठीक है, द मदर विल बी अ कैरियर, द फादर विल बी नॉर्मल. इसमें यहाँ पे नॉर्मल इसलिए बोला है क्योंकि वो फिनोटिपिकली दैट डिजीज इज नॉट सीन, बट जीनोटिपिकली द मदर इज कैरिंग द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज सी फॉर दिस. Okay, ऐसे ही such questions can be answered for similar types of question can be asked for the hemophilia. Okay, hemophilia भी same criteria यहाँ पे आता है. Mostly this cannot be the case. Okay, ऐसा केस हो सकता है, mother is carrier for hemophilia and father is hemophiliac. So जो भी यहाँ पे individuals बनेंगे, so over here you can see with respect to hemophilia, okay, हेमोफीलिया के रिस्पेक्ट में दिस डॉटर इज हेमोफीलियक. ओके, ये हेमोफीलियक है. ओके, दिस डॉटर इज हेमोफीलियक. दिस वन इज अ कैरियर. ओके, ये तो कैरियर है. ये सन जो है वो हेमोफीलियक है एंड दिस सन इज एब्सोल्युटली फाइन नॉर्मल. Okay, this one is normal.
This one is carrier. So in this hemophilia cases, if mother is a carrier and father is hemophiliac, then 50% of the offsprings will be hemophiliac, 25% will be of the offspring will be carrier, and 25% will be normal. Okay. Which question? ये hemophiliac वाला or the previous one? Color blindness question. Are you talking SG Super Gaming? Are you talking about the question? A couple has 2 sons and 2 daughters. Acha, hemophiliac wala. Hemophilia is a disease, okay, wherein the individual doesn't have the clotting factor, one of the clotting factor. ओके सो अगर ऐसी चीज होती है तो इंडिविजुअल विल ब्लीड टू डेथ. ओके अगर इसको एक भी थोड़ा सा भी कट लग गया तो उसमें वो हील नहीं होगा, इट विल ब्लीड कंटिन्यूसली. सो इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर because the gene for the production of clotting factor is present on the chromosomes, okay, on the sex chromosome, that is X chromosome के ऊपर होता है. And hemophilia is said to be an X linked, क्योंकि X chromosome पे इसका gene रहता है for the production of factor, clotting factor. Now if an individual, ये जस्ट एक केस मैंने दिखाया था, ऐसा अगर केस हो आ गया कि देयर इज अ कैरियर फीमेल, ओके, कैरियर फीमेल है एंड हेमोफीलिया मेल है, तो जो फादर है उसको हेमोफीलिया हुआ है और जो फीमेल है इज जस्ट हैविंग द जीन बट इट इज नॉट हेमोफीलिया. ठीक है, जस्ट लाइक द कलर ब्लाइंडनेस थिंग विच वी डिस्कस्ड. तो अगर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो दे विल प्रोड्यूस दीज इंडिविजुअल्स. दिस इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी. Okay, so there is a probability of production of 2 females and 2 males to an individual. So if we see that by the Punnett square, it is seen कि 2 individuals जैसे कि मेल और एक फीमेल हेमोफीलिया होगा, उनको हेमोफीलिया होगा, और एक जो फीमेल है वो कैरियर होगा, बट इट विल हैव द जीन बट इट विल नॉट बी हेमोफीलिया. ठीक है, और वन ऑफ द इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल. So these are just the cases, just the instances which can come for your test, okay, for your exams. So ऐसे questions आ सकते हैं in which a couple has 2 sons and 2 daughters. Only one is colorblind, only one is hemophiliac, and the rest of the siblings are normal. So ऐसे in this color blindness thing, we can put hemophilia as the case and do the solving. ठीक है, सेम चीज आएगी. So with this, we are done with the heredity. तो mostly ऐसे type of patients पूछे जाते हैं in this part, in this topic. So you have to know the monohybrid cross, the dihybrid cross, the sex determination, and the sex link inheritance. ओके, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, और डायहाइब्रिड क्रॉस में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. So with that, I am finishing today's session. Thank you everyone.
Okay, botany has to be revised on a regular basis. ओके अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तुमने कर लिया और 10 दिन का ब्रेक लेके वापस तुम आ गए उसके ऊपर. लाइक दिस यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स. तो यू हैव मोस्टली इट इज मेमोरी बेस्ड थियोरी ज्यादा होता है, तो यू हैव टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको एक पेपर पे लिख के उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, तो वो ज्यादा टाइम के लिए आपके माइंड में रहेंगे. एंड स्टडी शॉर्ट बाय शॉर्ट, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक थिंग्स. ओके, एक ही बार में सब कुछ मत करना, टॉपिक बाय टॉपिक आप जैसे करोगे तो दैट विल बी गुड. So thank you everyone.